You know inclination angle? Here you go. इंक्लिनेशन एंगल मैं आपको बताता हूँ, आपको पता भी होगा मगर नो प्रॉब्लम। ये आपका देखें, ये आपका वर्टिकल लोड है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लोड है। इस केस में आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, ठीक है। इस केस में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई हॉरिजॉन्टल लोड भी है, और ये आपका देखें इंक्लाइन लोड आ गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। दिस इज आर, ये अपने साथ लिखा करें। ये रिजल्टेंट आ गया, ये आपके पास वर्टिकल लोड आ गया, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लोड आ गया। तो ये वाला एंगल जो है ये इंक्लिनेशन एंगल है। ये वाला एंगल जो है ना, ये आपके पास इंक्लिनेशन एंगल आ गया, थीटा। When horizontal load is zero, this is only vertical load, so theta would be equal to zero. Theta would be equal to zero. Here you see theta is equal to tangent inverse horizontal over vertical is equal to zero, no inclination. When there is no inclination, our inclination factors are equal to 1. Now you put all these values in the Merhoff bearing capacity equation. You have ultimate load equal to 5688 kPa, and safe load is equal to ultimate over factor of safety. This is safe load. Any question you have on this? I solved the problem for you. Do you have any question? सर जी इस इक्वेशन नो में नो सर। सर अच्छा, इस सर इस इक्वेशन में ये फर्स्ट टर्म जो है इसमें सी की वैल्यू सर ये कैसे आई? सी की वैल्यू कहाँ से आई? मतलब ये सर कैसे आई? सी की वैल्यू तो आपको दी गई है ना, कोहेशन। अच्छा क्वेश्चन में है सर। ओके हाँ सर। ना बेटा, ये तो क्वेश्चन है, कोहेशन है ना, सॉइल की कोहेशन है ना। देखिए ये दी गई है, ये प्रॉब्लम अगर आपको कोहेशन 20 kPa और फाइव जो है ना वो 36 डिग्री। ओके सर। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि सेफ लोड तो आपके पास आ गया, सेफ बेरिंग कैपेसिटी 1896 kPa। तो आप मुझे बताएं सेफ लोड किसके बराबर होगा? सर क्रॉस सेक्शन एरिया से वो करेंगे। जी जी, सेफ लोड सर क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिवाइड कर लेंगे सर। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें आपके पास एरिया क्या है? एरिया क्या है फुटिंग का? देखें, बी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल प्राइम। देखें ये है सेफ लोड, यस, बी प्राइम इफेक्टिव एरिया आप इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू बिल्कुल सर। क्यू सेफ इंटू बी प्राइम इंटू एल प्राइम। ये आपके पास सेफ लोड हो गया। ये देखें ये प्रॉब्लम में नहीं था, आप अपने साथ ये इक्वेशन नोट करें। अच्छा जी, अब हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं जो कि मैंने आपको दिया था घर में सॉल्व करने के लिए, बट एनीवे यू वुड डू इट हियर। ये प्रॉब्लम है, एक रिटेनिंग वॉल है,
ठीक है ना। रिटेनिंग वॉल है, ये इसका फाउंडेशन है जो कि 1 मीटर डीप है। इस पे एक वर्टिकल लोड आ रहा है जो कि 282 किलो न्यूटन पर मीटर है। पर मीटर का मतलब यह है कि ये एक लॉन्ग रिटेनिंग वॉल है, इसलिए आपको पर मीटर रन पे लोड निकालना होगा। सबसे पहले ये बताएं, कोई फॉरेनर है इस क्लास में? यस सर। अभी मौजूद है? यस सर। तो वो क्यों नहीं बताता यार? आप भी सी आर यार, आप मुझे बताया करें। एनीवे, वो व्हेन आई स्विच टू उर्दू, you tell me in the beginning of the class there is a foreigner so that I start in English. He सर would जी never उसको tell. हो जाती है सर। Anyway, I would still like to speak in English, right? There is a vertical load which is 282 kilonewton per meter, and there is a horizontal load which is 102 kilonewton meter. And you see that there is an eccentricity of load EB. This is B is 3 meter. This is centroid of the footing, and the vertical load is away from the centroid with an eccentricity equal to 0.36 meter, and D is equal to 1 meter. So the first thing you have to do is to find B prime. How to find B prime? बताए ना यार। B minus 2 सर EB. बी माइनस टू ये Yes, B minus that is, हो गया 3 into 0.36. How much is this? ये आपके पास सर B prime 2.28 सर। 2.28. Good. अच्छा जी, L prime, because it is a long footing, there is no eccentricity. L prime is equal to L. No need. अब the next thing you have to find is what? NC, NQ, and gamma values from equation. From equation. ठीक है ना। और इक्वेशन आपको पता है कहाँ पे क्या है? अच्छा जी, अब आते हैं हम शेप फैक्टर्स की तरफ। शेप फैक्टर की क्या इक्वेशन है मैं बताता हूं। देखिए, ये है एन सी एन क्यू एन गैमा। ये यहां से आप मालूम कर सकते हैं एन सी एन क्यू एन गैमा। ये है आपके पास। क्यों नहीं आ रहा? ठीक है ना। ये है आपके पास एन क्यू एन गैमा की वैल्यू। फिर आपके पास है शेप फैक्टर। ये शेप फैक्टर की वैल्यू है। मैं सिर्फ शेप फैक्टर आपको बताता हूँ क्योंकि ये जरा ट्रिकी है इस प्रॉब्लम में। ये शेप फैक्टर, तो आपके पास एन सी एन क्यू एन गैमा फ्रॉम इक्वेशन you find from here, and also shape factor from this equation. You see in this shape factor, देखें इसमें because this is a long footing, so L prime is much greater than B prime. It means that B prime divided by L prime is equal to almost equal to 0, because L prime, this is a long footing, L prime is greater than B prime, so B prime or L prime is almost 0. So if you put B prime over L prime in this equation, you will see the shape factors. B prime, if you put this is 0, so SC would become 1.
SQ and S gamma is equal to 1 because B prime or L prime is almost 0. So SC, SQ and S gamma all are equal to 1. You got the idea? And look, in Tarzai bearing capacity equation we use for strip footing all shape factor equal to 1. So similarly happens in the Meyerhof equation. This is a kind of strip footing. It is a long footing. So next is to find DC, DQ and D gamma. Again this is from equation. Now come to find inclination factor. Inclination factor. Inclination IC, IQ and I gamma. So first you find the theta. Theta is equal to tangent inverse horizontal force over vertical force, right? So this comes out to be, here you see theta is 19.8 degree. IC, IQ and I gamma you find from this equation are these values. So you put all these values in the Meyerhof bearing capacity equation and you will get 363 kPa. This is ultimate load. And ultimate bearing capacity, ultimate load would be ultimate bearing capacity which if I say into B prime because B prime is 2.28 meter. It will give you load in 1283 kilonewton per meter run. You divide if you want to. Okay, you understand up to this point? Any questions? I will move on. सर ये एल प्राइम के किस तरह बराबर है सर? जी सर ये एल प्राइम के किस तरह बराबर है? ये इसलिए कि एल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं है ना, ई एल जीरो है ना, तो एल प्राइम देखो एल माइनस टू ई एल जीरो है जी. ओके सर. दूसरा क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन? नो सर. अच्छा जी, तो आपके पास अल्टीमेट लोड आ गया 1283 किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ultimate load divided by applied load, applied vertical load. So ultimate load is 1283 and applied vertical load is given which is 282. So the factor of safety is equal to 4.5. You got the idea? You got the idea? Okay. Now let's come to the next topic. Meyerhof we did. We finished Meyerhof. We solved these two problems. Now come to this problem. Alternate approach to consider eccentric loading. One is to find B prime and put in the bearing capacity equation and find the ultimate value. But usually when the geotechnical engineer is calculating the bearing capacity, he does not have any idea of the loads or their eccentricities. So he cannot find D prime because he doesn't have any load, he doesn't have any eccentricity. So he finds the bearing capacity without considering any eccentric loading. When the foundation engineer is designing the foundation and he has eccentricity of load, right, how he would consider that in his calculations afterward. So this is the problem, right? So let's solve this. You see, this is
a strict footing, the width is B, this is the top view, and length is very long. I consider only a unit strip of 1 unit length, 1 feet or 1 meter, right? This is the cross section of the footing. This is with B. There is a load Q per meter because it is a long footing, strip footing. So we represent the load in per meter form. And there is also a moment MB. You see, there is a moment M. Because of this load and this moment, the stress distribution beneath the foundation is like this. Here it is maximum and here it is minimum because if there was no moment, it would have been uniform. But because there is a moment, this is causing, Q is causing compression, and moment is causing compression here. So compression plus compression leads to Q maximum. Here on this end, Q is causing compression, but moment is causing tension, right? So this is less Q minimum. How to find Q maximum and Q minimum? Because of load and moment, Q maximum and Q minimum is equal to P by A or Q by A. This is an axial compression formula, plus minus, plus for maximum, Q maximum, and negative for Q minimum. MC or I is a flexural formula, flexural equation. ठीक है ना यार? इसको ये पावर पॉइंट में नहीं खोल सकता, ये पावर पॉइंट में कैसे खोले? जस्ट अ मिनट, लेट। नहीं नहीं, ये मैंने बनाई ही उसमें था, ओपन विद में करते हैं। ओपन विद, ओपन विद है पेंट 3D, एडिट विद पेंट 3D, ये होगा ना? शेयर शेयर शेयर, ओपन विद, ये है ना? ठीक, हो गया। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी तो मैं इसको ठीक भी कर लूँ। अच्छा जी, तो देखें ए इज, ये क्यों नजर नहीं आ रहा? माउस कहाँ? अच्छा, माउस कहाँ चला गया? माउस माउस, ये क्या हो गया? अच्छा जी, अच्छा एनीवे, देखें ए इज इक्वल टू बी इंटू 1, ये एरिया ऑफ द फुटिंग है। मोमेंट इज क्यू इंटू एक्सेंट्रिसिटी, is the moment, Q into eccentricity of the load leads to moment. C is the distance from the centroid to the remotest fiber, which is B by 2. It is not B3 by 2, it is B by 2. Yeah. Oh. Oh. Rubber. Here you go. It is B by 2. Here you go. It is B by 2. Okay, let's. अच्छा जी, ये मिटा देते हैं यार, पूरा बी लिख लेते हैं दोबारा। ठीक हो गया, here b by 2, वो थोड़ा बड़ा भी है मेरे ख्याल में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ पे? बड़ा नहीं हो सकता? फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कहाँ पे है? नहीं है, ये लिखा है
फॉन्ट साइज गायब हो गया है, फॉन्ट साइज गायब हो गया है। चलें, b/2। ओह, अच्छा जी। I, which is moment of inertia, is उस क्या फॉर्मूला होता है? द फॉर्मूला इज बी एच 3/क्यूब। एच इज एक्चुअली द डायमेंशन in the direction of moment. So here h is equal to b because moment is in this direction. Moment is in this direction, so h becomes b cube into 1 in this direction by 12. This is moment of inertia. Put all these values in the above equation, you would get q maximum and q minimum, this equation, plus for maximum sign, negative for minimum sign. Any question? Any question? Asha ji. So you got Q maximum and Q minimum. So the structure engineer calculates this way, Q maximum and Q minimum. He then checks Q maximum with the bearing capacity given by the geotechnical engineer. The Q maximum, let me write it here. Design, DS, design of footing should be such that Q maximum is always less than Q allowable. That is allowable bearing capacity. That should be, ठीक है ना? तो वो then check. Now you got the idea. I hope you got it. Okay, let's solve the problem. Let's solve a problem on this. Problem. Problem नहीं है? It has to be सर ये लास्ट कॉलम में सर last column. क्यू मैक्स एग्जांपल सर Yes, good. Good. आपका क्या नाम है? What is your name? जिशान Zishan. Good, Zishan. I appreciate. अच्छा जी। थैंक यू सर एक 2 मिनट मुझे दें, 2 मिनट आप भी गपशप लगाएं, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। ओके सर। तारिका वाया हाँ यार स्थळे बचा यार अमोल म्हणजे रिकॉर्डिंग यार शाना वो दे कट रहा जी। मेला भ्या चला मेला स्थळे जो सर जी कट रहा ना सवेरा अमोल म्हणजे रिकॉर्डिंग ऑप्शन राजदा बसको ठीक बस सही था बाबू से तंगी खलास शाना زن زخوي جنوا وش زغنا So our previous class regarding the system. Previous class regarding the system. वाला तरी फाउंडेशन और तरी वाला ashta. आओ जी नबी अलग तपूसो का यार ताते दगा दर्शन पे लिंक या मातम लग
हेलो हेलो यस सर। मेरा पास वो तो दोनों खामोश है जी सर वेल गपशप लगे हुए यार मु खो गपशप लगोलो खो बाबू वही से यार आंदे रिकॉर्डिंग वही खबर मप के कोई बात सुनो यार, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम लोग, ये हमें कैसे मिलेगी? वो तो इतनी बड़ी फाइल्स होती हैं। ये रिकॉर्ड आपको आप स्टॉप कर लो ना, फिर दोबारा आपको रिज्यूम करो। करना ना होगा क्या चीज? आओ कन अप्पा वाला ऑप्शन दला संगत دي د ولې مونږ څنګه خبرې کوو یار چې ریکارډ مې دې نه راځي बाबू वही तस वसे खराब हो मगर माहौल वही ما खराब हो बाबू जरा पखयर ने मिदा ओ मतलब بابو یو خو چې بس خالی سړی غپ شپ ته سره لګولای ګروپ کې چې څوک د کار میسج کوي نو ریپلای نه کوي बाबू सर पेपर है माचे ने نو बाबू सर مړه څنګه पेपर है माचे ने बंदे कसम هغه ته نه کار والا میسج ایکسپیکټ کولو نه کنه ځکه صدمه हेलो यार ये उज़ैफा कह रहे कि यूट्यूब पे अपलोड कर दो। हेलो यस सर यस हेलो सर, हेलो यस सर, हेलो। अच्छा 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 जी, आप सुने। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अगेन आई हैव टू ओपन इट इन पेंट ब्रश सो दैट आई कुड एडिट इट। Here you go। अच्छा जी, तो ये प्रॉब्लम है। ओ देखता हूँ मैं। कंट्रोल एक्स करता हूँ। इसके solution है। थोड़ा सा मैं लेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, भी डिलीट करता हूँ, ठीक है ना, इसको भी डिलीट करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है आपका। लाइन खींचता हूँ, लाइन, फिर यहाँ पे कोई ब्लू लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे अच्छा जी, ये दो सिनेरियोज है, इसलिए मैंने इसको चैप्टर कर लिया। आप देखें, दिस फर्स्ट सिनेरियो, this is the on the left side, geotechnical engineer is working to find out bearing capacity. What he has is that there is a soil cohesion is 0, phi is 30 degree, right? Water table is 1.2 meter below, right? 1.2 meter below the surface. Depth is of the footing is 0.6 meter. Gamma is 19.7 kilometer per meter cube, both above and below the water table. The question, the problem is given here, right? This is just a solution. So, geotechnical engineer is doing what? He doesn't have any load, he doesn't have any eccentricity, so he is using
the Tarzai bearing capacity equation. Julian has given you bearing. Actually, he used Tarzai bearing capacity equation with Meyerhof bearing capacity factors and found out ultimate bearing capacity equal to 363 kilonewton, 363 kPa, and Q safe is 121 kPa. 121 kPa. He has found this. He has no idea of the eccentricity or load. So he has given you, as a foundation engineer, safe bearing capacity equal to 121 kPa. Okay. Now afterward, when the foundation engineer is designing the foundation, he has the load equal to 100 kilonewton per meter, but there is an eccentricity equal to 0.15 meter. What he would do, he would use the equation and find Q maximum and Q minimum, which is 145 and 20 kPa. Using the same equation which I gave you, he found that one Q maximum should be less than Q safe, which is 121 kPa. But what happens is this, Q maximum is more than Q safe. So what he has to do, he has to revise the foundation and use a bigger footing weight to find, so that Q maximum is always less than Q safe. Do you have any question? Hello? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Do you have any question? Okay, good. This has been solved in more detail here in the problem solution. So you can, oh my God, you can always go back here and find the, here you see, this is the, this is a step-by-step solution. You can always go back and find it. I summarize you the solution, right? You can see this. Acha ji. Now, another article. Ibrahim. Ibrahim. Light off. Acha ji. There is another analysis. Here you go. This is another article type of analysis. Whenever you want to find bearing capacity, there are two approaches to find bearing capacity. One is to use undrained analysis. The other is to use drained analysis. Undrained means that there is excess pore water pressure in the soil. The water in the pores of the soil has an excess pore water pressure, and you in drained analysis, when there is the excess pore water pressure has been dissipated, become zero, right? So you have always two options: undrained analysis and drained analysis. So which one to use when this is the topic? So in undrained analysis, we use total shear strength parameters, total stress parameters, Cu, phi u, because Cu undrained cohesion in undrained form, phi u friction in undrained form, and gamma. And whenever we are analyzing undrained analysis, you use no water table effect. Effect of water table is not taken into account. Second, we use undrained analysis for clay soil. It is used for clay soil to find bearing capacity immediately after the construction, when clay is under undrained condition. When you have a clay soil, right,
when you have a clay soil and you complete your construction. Construction means you put load on the clay soil, saturated clay soil. So there would be excess pore water pressure immediately after construction. When there is excess pore water pressure, it means that you have to do the undrained analysis, right? So it is used for clay soil. It is not used for sand because sand is never under undrained condition. It has high permeability, and whenever you put load on the sandy soil, the pore water has excess pore water pressure, but because permeability is very large, they are big voids, all of the pressure is dissipated instantly. So the sand is never under undrained form, right? And governs in normally consolidated clay. इसका मतलब ये है that if you find out bearing capacity uh, in undrained form, that bearing capacity will be very low. So it means this governs the design. Do you have any questions so that I move to the drained analysis? G. No, sir. Okay. Drained analysis. If you have question, then ask. If you don't have question, don't say I don't have any question. I will pause for a few seconds. If anyone asks me question, then I would answer. The second type is drained analysis. Drained, as I told you, that it doesn't have excess pore water pressure. You don't consider excess pore water pressure in the soil. Effective stress parameters are used. T prime, phi prime, gamma prime, and effect of water table is considered. Used for sand because it is always in drained condition, right? Why it is always in drained condition? Because it has greater permeability, right? So for sand, you use drained analysis. Used for clays, drained analysis is also used for clays to find bearing capacity after many years of construction. अच्छा जी. So many, I said that it is also used for clays because when you do, when you do construction on a saturated clay, right? Uh, After a very long time, all excess pore water pressure is dissipated. Maybe after 10 years, 20 years, or even 50 years, all of the excess pore water pressure would have been dissipated and the clay soil would have come in drained form, under drained form. So in that case, you also use drained analysis for clays. So do you have any question up to this point? No, sir. It's clear. अच्छा जी, अच्छा जी. तो 4 मिनट again. अच्छा जी. And it governs in heavily over consolidated clays. इसका मतलब ये हुआ कि when you have heavily over consolidated clays and you find out bearing capacity using undrained analysis and using drained analysis, right? So the bearing capacity using drained analysis would be low for heavily over consolidated clay. So you would consider the low bearing capacity value for your design. That's why it's called it governs in heavily over consolidated clay. Similarly, here you see undrained analysis governs in NC clays. इसका मतलब ये हुआ कि if you have a normally consolidated clay and you find out bearing capacity using undrained analysis and also using drained analysis, then the bearing capacity you obtain using undrained analysis would be low. That's why it governs the design. Undrained analysis governs the design in normally consolidated clays and it governs the design
designed for heavy or concentrated clays. अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे ये है कि why normally concentrated clays the bearing capacity is low when you do undrained analysis, right? But it is higher when you do the drained analysis. Can anybody answer? Acha. Anybody else? Anybody else? Anybody else have any clue to this answer? To the answer? सर ड्रेन एनालिसिस में हमारे पास पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन होती है, जबकि अनड्रेन में इंटरेक्शन नहीं होता हमारे पास। अच्छा जी, कोई और? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप उसको समझाऊं, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट है। आप भूल चुके हैं कि क्या, आप मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, देखें, in normally consolidated clays, when it is in undrained form, right, and when the loads comes on it, it gets compressed. It tries to get compressed. So excess pore water pressure rises. आपको पता है, when excess pore water pressure rises, right, so effective stress would be reduced, because effective stress is equal to total stress minus pore water pressure. And when pore water pressure rises, right, definitely effective stress would be less. And when effective stress is less, shear strength would be less, because shear strength is equal to C plus sigma phi, C prime plus sigma prime tangent phi prime. So sigma prime, it depends on sigma prime. When sigma prime is less, tau would be less, shear strength would be less. And when shear strength is less, bearing capacity would be low. ठीक है ना? But after a very long time, when excess pore water pressure is equal to 0 and the soil becomes under drained form, right, U would be 0. So it means effective stress would be high. Effective stress are high, shear strength would be high, and bearing capacity would be high. That's why for normal concentrated clays, under undrained analysis, the bearing capacity is low. Who would repeat this? लगी परचन है, हाँ? Who can repeat what I said? सर जी, सनोमेट कंसंट्रेटेड क्ले में हमारे पास जो जब वो कंप्रेस हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे पास एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारे पास राइज हो जाता है। गुड 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 गुड। जब वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर राइज हो जाता है तो इसके बाद जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है सर। जी बिल्कुल। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है तो इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेस है तो वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो कैपेसिटी हमारे पास हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो फिर क्या होता है उसके बाद? सर का बियरिंग कैपेसिटी हमारे पास कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास स्टेटमेंट भी हमारे पास खास हो जाती है। नहीं बेटा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन राइट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप कोई डैम बना लेते हैं ऑन सैचुरेटेड क्ले, व्हाट यू सेड हैपेंस, बट आफ्टर मेनी इयर्स व्हाट हैपेंस? गुड, आफ्टर many years
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तो फिर भी होगा क्योंकि वाटर है तो प्रेशर भी होगा, बट एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विच इज ड्यू टू लोड गेट्स डिसिपेटेड। ठीक है, तो फिर क्या सर होगा? मगर एक्सेस को वाटर प्रेशर अगर डिसिपेट हो जाता है तो वो तो फिर ड्रेन कंडीशन में आ जाता है। अच्छा जी, डिसिपेट हो जाता है, देन इफेक्टिव सर स्ट्रेस तो फिर वुड तो बी, वो ड्रेन कंडीशन में आ जाता है। आ जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और इसकी वजह से बेरिंग कैपेसिटी भी हाई हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। यस सर। So immediately after the construction, when the clay is under undrained form, you have low bearing capacity, and after many years when the clay is under drained form, it has high bearing capacity, right? So Yes sir. which Yes. situation governs the design? Is it immediately after the construction, or is it long after the construction? Immediately after the construction, the factor of safety would be low than the factor of safety after a long time. Okay, that's fine. But come to the heavily over concentrated clays, the situation is altogether different. Here, the long-term factor of safety is low, and the immediate factor of safety is high. Can anybody elaborate why is this? नहीं, मैं आपको now I explain it to you because I don't know why you have forgotten the fifth semester concept. In over concentrated clays, heavily over concentrated clays, what happens when you construct on this, there is negative pore water pressure developed. Instead of positive, negative pore water pressure is developed. Negative pore water pressure means high effective stress. Why? Because sigma prime is equal to sigma minus u. And when u is negative, so negative, negative, positive, then sigma prime is equal to sigma plus u. Sigma plus u ho jata hai. So it means sigma prime is higher. When sigma prime is higher, it means tau is higher, and tau is higher, bearing capacity is higher, and factor of safety is higher. But after a long time, when excess pore water pressure dissipates, that negative pore water pressure becomes zero, right? So the effective stress is now lower than previous, and so is the shear strength, and so is the bearing capacity. Now the question arises, why heavily over-concentrated clays develop a negative excess pore water pressure? This is again from your fifth semester. If you see the notes, you will come to the point. Rather, I have also placed this concept again here in this chapter. You see, you can go. You see, these are your fifth semester notes. These all curves are from, and you see this negative pore water pressure that is developed over concentrated clays, and this is a negative pore water pressure that is developed, right? So you go through this. Your previous fifth semester note which I have also placed here. ठीक है ना? अब आते हैं next topic की तरफ. If you don't have any question here, then we would move on to the next problem. Let's mentor के बराशी. Do you have any problem? Okay. Let's move on to the next type. See? सब नहीं क्लास का नाम तलाशा देखो. My kids also have online class and they have some problems. Let me resolve it. Okay. Okay, sir.
है ना, बीजीएम। हाँ, अच्छा जी, फाउंडेशन डिजाइन फिलॉसफी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। देयर आर टू फिलॉसफीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो तो एनालिसिस टाइप थी ना जो इससे पहले पढ़ी, ये बिल्कुल फिलॉसफी डिफरेंट है। फाउंडेशन डिजाइन की फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो किस्म की, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज। One is allowable stress design, which is called AST, and the other is limit state design, which is called LSD. ठीक है ना। पहले हम आते हैं allowable stress design पे। तो देखें, whatever we have done so far is actually allowable stress design. हमने जितनी बेरिंग कैपेसिटीज मालूम की अभी तक, जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो है allowable stress design। ठीक है ना। तो लेट्स रिपीट allowable stress design. That's a traditional method. मतलब ये है कि this has been used in the past and it is still used by the geotechnical engineer. Many of the geotechnical engineers still use this traditional allowable stress design method. In allowable stress design method, what we do, the load that is coming upon the foundation, we don't factor it. जिस तरह आप बीम डिजाइन करते वक्त डेड लोड को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लाइव लोड को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अल्टीमेट लोड निकाल लेते हैं और उसके लिए डिजाइन करते हैं। वी डोंट डू दिस इन AST फॉर footing. Whatever dead load is coming, whatever live load is coming, you add them up and you design it for it. So you use no load factors to increase the load effect on foundation to find the applied foundation pressure. So applied foundation pressure is just dead load plus live load divided by area of the foundation. Okay, no strength reduction factor are used. जो कोहिजन आती है लैब से, जो फाई आती है, उसी पे आप उसी को यूज करके तरजाई बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में या मेयरहॉफ बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में, और आप मालूम कर लेते हैं बेरिंग कैपेसिटी। टेलीफोन नंबर शायद नोमान और उन्हें टेलीफोन दर तकड़ वो तो जर्रा शकना। अच्छा जी, तो आप अलाउड बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं। फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे इंश्योर करते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यू अप्लाइड और क्यू अलाउबल, और आपका अप्लाइड लोड जो है ना वो अलाउबल से 2.5 to 3 टाइम्स कम होना चाहिए। मसलन 300 kPa जो है ना वो आपका आपकी बेरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो आप जो है ना 100 kPa अप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स आपने लेस अप्लाई कर लिया। दिस इज हाउ अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड गोज। एनी क्वेश्चन एन अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन? अच्छा, गुड। अब आते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन की तरफ। लिमिट स्टेट डिजाइन की तरफ मैं आपको ये बताता हूँ। लिमिट स्टेट डिजाइन में क्या करते हैं, it is gaining popularity. Now most of the building codes are based on limit state design, ठीक है ना। So ultimately after a few years that traditional method would be finished, would vanish from the books, and limit state design would be there. And now all the recent book that is coming up, they are based on limit state design method. All the codes are now on limit state design method, because limit state design, the structure that you design, the concrete structure that you design or the steel structure that you design is based on limit state design method. So there is a logical point that the foundation should also be based upon the limit state design method. Limit state design method, briefly I tell you, the same as you do for beam. आपने beam design and analysis की होंगी RCC में. What you do, you increase the loads, dead load by a factor of, for example, 1.2,
and live by 1.6, and you design the beam for that increased load. On the other hand, you do another thing. The moment capacity of the beam, you reduce it with some strength reduction factor like 0.9. तो एक तरफ you increase the load, ठीक है ना, और दूसरी तरफ on the other hand you reduce the beam capacity, and then you find out you design the beam. Similarly here, in limit state design का जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है वो है अल्टीमेट लिमिट स्टेट, स्ट्रेंथ पे बेस्ड जो है, और जो कि सेटलमेंट बेस है उसको कहते हैं सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. जो स्ट्रेंथ पे बेस्ड है दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट लिमिट स्टेट. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट लिमिट स्टेट. व्हाट वी डू, लोड फैक्टर आर यूज्ड to increase the applied load, like 1.25 for dead, that depends upon the code, 1.5 for live load, to get the design load VD. This is the design load. Then we use strength reduction factors, for example 0.8 for friction angle and 0.7 for cohesion, to find design bearing resistance, right? RD should be greater than VD to satisfy the bearing capacity resistance. So resistance should be greater than the design loads to satisfy the bearing resistance limit state. So do you have any question on this? You understood? Oh, let's solve an example on this, right? So here you go. Here you go. Yes. Problem solution. ये question है. This is the question, right? You solve this question first on ASD method. You solve it yourself. Take 5 minutes, right? In this 5 minutes, I have a small job I would do, and you solve this problem on number 10 using allowable stress design method and give me the answer. Okay? Okay, sir. Go ahead. Go ahead. Take 5 minutes to solve this problem using ASD method. Then I would show you how it is solved using ULS method. जरा सा.
कैलकुलेशन फलम गोरम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, क्या आंसर आया आपका? जी, व्हाट इज योर आंसर यूजिंग ASD मेथड? जी, क्या क्या आंसर आया? एनी वन हैज गॉट आंसर? जी, अब्दुल बासित आप बताएं। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है? आपकी अटेंडेंस हो चुकी है? CR CR यस सर। आपकी अटेंडेंस हो चुकी है? सर अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली होती है। यार शायान शायान का नंबर है आपके पास जो TA है? CR सर मैं देखता हूँ। उसका वो नंबर रखे ना। हाँ ना, उसको कॉल करें कि वो जल्दी अटेंडेंस ले ले। सर ये एक नंबर है आप जरा उसके पास 301 वाला। 301 इसका तो नहीं है। नोमान जी शायद इदरीस से नंबर दे जाओ 301 का हो जैसे ना। एक तो इदरीस है, वो तो पुराना TA था, उसका नंबर तो नहीं है क्या? शायान का क्या नंबर है? दाढ़ी वाला। जी जी बिल्कुल। दाढ़ी सब एक बहुत बड़ी दाढ़ी है कि छोटी दाढ़ी है? सर वो बड़ी दाढ़ी जो है। हाँ, ये तो पुराना नंबर है। ये हाँ, ये पुराना नंबर 0301 8763 462। ये जी सर आपके पास नंबर है, ये इदरीस का है। जी सर। शायान का नंबर बसिंग गुरु मगर सर ये मोबाइल मगर तो शायान नंबर से वो अलग मिलाव करा था। अभी शायान को हम मिलाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं। देखिए, आपने क्यों सॉल्व नहीं किया? तो बहुत सा सिंपल प्रॉब्लम है, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम बॉयज। एक ने भी सॉल्व नहीं किया, गलत भी सॉल्व नहीं किया किसी ने, गलत भी नहीं किया किसी ने सॉल्व। अजीब बात है यार। अरे मिला गया। अच्छा जी, चले यार, आप 10 से मस नहीं होते तो फिर कैसे मसला हल होगा, ये मुझे बताएं। एक एक लफ्ज भी खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? फिर तो टीचर डिसअपॉइंट हो जाता है ना कि स्टूडेंट तो एक कदम भी नहीं ले रहा। और तो अटेंडेंस वाला था ना। बस सिंह चलो को माता चलो है नो अटेंडेंस सिंह तब इतना खड़े हुए मुता। मुसाविर, आपको तरीका नहीं आता अटेंडेंस का, सर को बता दे। जी जी जी, बस मैंने शायान से बात कर ली है, ठीक है ना। मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। सर ये जो पीपल के साथ, सर ये जो पीपल के साथ ये जो टिक है सर, जो 9 जो नीचे लिखा है इसके साथ, ये
सर मेरे ख्याल से इस पे अटेंडेंस ले सकते हैं सर, ये ऑन ऑफ कर दे सर, ये जो नीचे वाली चीज है सर। ये नो सर, सर मैंने किया है, मगर पता नहीं इस लैपटॉप में वो एक्सेल शीट नहीं डेवलप होती। मैं फिलहाल इस तरह करता हूँ जी सर, कि प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और ये सारे मैं सेव करता हूँ, ठीक है ना। तब डिस्प्ले ठीक है ना मशीन भला ठीक है ना उसने शर्ट्स वाले। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले ले सर। तो अच्छा तो बोल कौन डिक्रीज को मैं पॉल आओ सेव का पर डेस्कटॉप बंद हां करना सब मिस निश ऑन दे है न्यू वन न्यू ने प्रिंट स्क्रीन हम वाले शे प्रिंट स्क्रीन वाओ आजा स्नाइप कर स्नाइप क्या कर देन हां akhirnya ini suku gimana apa kila kita buat dah klik kan dah sih waktu ni dah mana dah wajib bukan ni sih ada isu mana jab jati ho kaza dah ini server isu हाँ अगर से बस कंट्रोल वी वाली पके वालों kan pura sana dalam kumang tongkang lupa kan tidak masalah एक ही लिखा हुआ ना मैं शायद चलिया हुआ से बस करने गुड अच्छा जी ये तो हो गया। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ओह ये है एएसटी मेथड। तो डिजाइन लोड आपके पास देखें डेड प्लस लाइव ये आ गया सर आपकी स्क्रीन फॉर फाई इक्वल टू 10 डिग्री। सर आपकी स्क्रीन अच्छा अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। ये यहाँ देखा यू आर प्रेजेंटिंग तो ये तो है। मैं स्टॉप कर ऑन करता हूँ। अब ठीक हो गया? यस ठीक हो गया। अच्छा जी देखें एसडी मेथड में डिजाइन लोड आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड 5500 किलो न्यूटन है। बेरिंग कैपेसिटी मालूम करनी है फॉर फाइव 39 डिग्री। एन क्यू और एन गैम आपके पास ये आ गया। एन सी मैंने मालूम नहीं किया क्योंकि सी इसमें 0 है तो कोई जरूरत नहीं है। गैमा
प्राइम जो कि वाटर टेबल भी चूंकि टॉप पे है तो दो टर्म्स आपके बेरिंग कैपेसिटी पे अफेक्ट होंगे, इसलिए आपको यू यूज effective or submerged unit weight, which is 10.2 kilonewton per meter cube. We are using Tarzai bearing capacity equation with Merhoff bearing capacity factors. So shape factor for square footing SC 1.2 and S gamma 0.8 for square footing using Tarzai bearing capacity equation. So you use Tarzai bearing capacity equation and find out bearing capacity, which is 1802 kPa. Ultimate load is bearing capacity into area of the footing, it is 16,218 kilonewton. Factor of safety is ultimate load divided by load applied is 3. This is your ASD allowable stress design method, which is the routine method you have done so far. Now let's come to the limit equilibrium method, which is the new one for you, which is where? Here. This is the ultimate limit state design. Same problem, but it has given load factor for phi is 1, for live it is 1.3, strength reduction for phi is 0.8. So you find first the design load, equal to 4000 dead load. This is design load. Then design bearing resistance RD. RD is the ultimate bearing capacity, which is this equation into AF effective area of the footing. But the difference is this, right? So the reduced angle is not 39 degree, 90 degree. So you use 30 degree to find out Merhoff bearing capacity factor, which are 26 and 29. Use all these values in this equation here, and you find the resistance, which is 6777 kilonewton. Now you compare your resistance with design load. Design load is 5950 and the resistance is 6777. It means you are safe because RD, which is resistance, is greater than the design load. The bearing resistance limit state is satisfied. Do you have any this? Anyone has any question? So on one hand, you increase the load, and on the other hand, you reduce the capacity, and then you equated the, you compare the design load with the design bearing resistance and see if the resistance is equal or more than, if resistance is equal or more than design capacity, you are safe. There is no concept of safety. Factor of safety is achieved through what? Because definitely you need a factor of safety, but there is no factor of safety seen here. How it is achieved? Can anybody tell me? Yes, yes, that's good. Because we have, और ये method जो है ना, this method ultimate demonstrate makes more sense to me, because you see dead load में variability कम है, you use very small factor to increase it. Live load has more variability, so you use a higher load factor for this. ठीक है ना? Whereas in AST method you don't have that opportunity to deal every load separately according to the variability, according to the estimation. There is more estimation, so that's why you use greater load factor for live. But you don't have any opportunity in AST. It is always one. For dead it is one. For live load it is one. So it makes less sense. For live load you have to use bigger load factor because there is more uncertainty in that.
In dead load, there's less uncertainty. You use small load factor. Similarly, strength reduction factor in electrical is more reliable value, is more reliable than cohesion. That's why you use a bigger factor, less reduction for friction and more reduction for cohesion, because in cohesion there is more uncertainty. ठीक है ना? तो बात ये है कि you don't have that opportunity in the AS, but you have that opportunity in limit state design method to deal every uncertainty separately. You understood this point? Repeat this point. Repeat it. What I mean? उर्दू में बताएं. No problem. जी. Who would repeat what I said? ये क्या है? आफाक अहमद पारा, आप बताएं मैंने क्या कहा? जी आफाक, आप बता सकते हैं मैंने क्या कहा? जी यार, आप कहते हैं कि हम समझ गए, जब आप समझ गए तो जब मैं पूछता तो आप कहते हैं आपने। इनामुल्ला, आप बताएं। इनामुल्ला, आप बताएं। इनामुल्ला, बोले यार। इनामुल्ला, आप कहाँ हैं? आर यू देयर? इनामुल्ला, कोई भी नहीं बता सकता, क्यों? मला कहियो कसम निष्ठा। हाँ, ये तूरे सीनीन बताए। तूरे सीनीन, आप बताएं। तूरे सीनीन, इकरा, आप बताएं। इकरा, आर यू देयर? अलग नोमान हो कसम बात है, रिस्पॉन्स न रखे। हाँ, यस सर। आप कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? पता ही नहीं लगी। इनामुल्ला सर। सर मैं अभी नेट का मसला था, अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर, और अभी मुझे स्लाइड शो नहीं हो रहे थे। मैंने 2 मिनट में भी सीआर को बताया कि किस तरह मैं अच्छा चले, ठीक है, किस तरह चले। मुझे शो हो जाए। अच्छा, दूसरा मैंने तोरे सीनीन का नाम लिया, वो कहाँ है? अच्छा, तो आपने भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। अब जो मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? जो मैंने कहा आप समझ गई हैं? आप टाइप करें अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा। ऐसे रवा दिया। इकरा, हाँ?
हाँ, चलें आप ये बताएं, जो अभी आए आए हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई, वो अपने नाम बताए, माइक ऑन करके मुझे अपना नाम बताए, जिसकी अटेंडेंस मैंने फहीम स्नैपशॉट सर। से नहीं ली, वो बताए कौन कौन है। फहीम कहाँ है? फहीम, यस सर। फहीम कहाँ है आप? समझ लगा? फहीम, अच्छा जान जी चला सर। नोट, फहीम उल हसन, जान चला नोट। अच्छा, दूसरा बताए कौन है जो अभी आया है जिसका अटेंडेंस हमने नहीं ली? सर इनामुल्ला सर 188 रोल नंबर। इनामुल्ला ता खुश है कने यार, इनामुल्ला। दूसरा कौन है? सर बशीर अहमद। बशीर अहमद कर लें। और बशीर अहमद। वशो नोट सूख दी। अहमद फराज लिख लें, अहमद फराज। अब्दुल बासित कर लो। सर जी हामिद। जी हामिदुल्लाह कर लो, तो लिखिए। हाँ हामिदुल्लाह। सर जी जमाल खान। अच्छा, जमाल खान लिख लो। शहाब मकसूद लिखा, जमाल खान और शहाब मकसूद। अच्छा जी, और कौन है? खालिद रहमान। जी जरा खालिद रहमान। कहाँ पे हैं आप? फाटा से। ना ना ना, बड़ा करना दत्ता जरता है। हाँ हाँ, उधर आ जा। खालिद रहमान दादी जा, खालिद रहमान अमूली जी जरक खान। छोकर। जरक खान। सबर करो, सबर करो। आप इस तरह करें कि यहाँ पे अपना नाम बस टाइप करें कि प्रेजेंट, बस यहाँ पे आ जाएगा चैट में। चैट में आप बस अपना नाम लिख लें, प्रेजेंट। जी जी, बस ठीक है। ये इस तरह करें ताकि बस क्लास को वाइंड अप करें। बस दादी रहा। हाँ, तू लिखी तो मैं ना फोन कर। अच्छा जी, वो जिनकी हो चुकी है वो तो ना करे ना, जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो ना लिखे, फिर ज्यादा हो जाएगा हम पे।